Assalamu alaikum guys. Today we're gonna be doing O-level physics 5054 May June 2021 paper 1 variant 1. Before starting मैं आपको आपके एग्जाम के बारे में बता देता हूँ and about our topical papers, which is a very convenient way to learn. So yeah, first of all your exam. If you want to skip एक timestamp लगा होगा, you can skip to that. But if you want to stay, which I highly recommend for you to do so, you can stay. So yeah, main आपको details बता देता हूँ about your paper. First of all, your paper P1 will contain 40 questions. Each question will be 1 mark. The total paper 1 will be 40 marks. And you have to attempt all the questions. Unlike P2, आप कोई भी questions P1 में नहीं leave करोगे. Total जो time allocated होगा ना for your paper 1, you will be given 1 hour to attempt all the paper. ठीक है ना? 40 questions और 1 hour आपको मिलेंगे उसको सॉल्व करने के लिए. सो ऑन एवरेज आपके पास होगा 1 मिनट 30 सेकेंड फॉर ईच क्वेश्चन. तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ना ही आप ज्यादा तेज हों ना ही आप ज्यादा आहिस्ता हों. लाइक कीप अ मीडियम पेस. जो इजी क्वेश्चंस होते हैं लाइक गेट ओवर विद देम, एंड द हार्ड क्वेश्चंस को आप बाद में भी कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 2 and 3 आर इजी. क्वेश्चन 1 3 and 5 are easy. So I'm gonna do them first. But question 2 and question 4 are hard. So I'm gonna leave them for now and I'm gonna focus on the easier questions. And when I'm done with the easier questions, I can focus on question 2 and question 4. Like that's how I would do it, right? So yeah. And about our topical past papers. तो हमारे topical past papers जो है, those are like any other past papers. Like जो आपने रीड एंड राइट के पास पेपर्स देखे होंगे या रेड स्पॉट के पास पेपर्स देखे होंगे, दे आर लाइक दैट इन अ सेंस कि हमारे पास एक कंपाइल्ड वर्जन है ऑफ द टॉपिकल पास पेपर्स. बट हमारे पास जो एज है ओवर देम इज दैट फॉर एवरी टॉपिक देयर विल बी अ स्पेसिफिक क्यूआर कोड. राइट, ये देखो क्यूआर कोड ऐसा होता है. एंड इफ यू स्कैन इट, अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, इट विल लीड यू टू अ प्लेलिस्ट ऑन हाउ टू सॉल्व दैट टॉपिक्स क्वेश्चंस. लाइक फॉर एग्जांपल, दिस इज अ क्यूआर कोड इन माय बुक और आपने इस क्यूआर कोड को स्कैन किया है. जैसे ही आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, इट विल टेक यू टू द प्लेलिस्ट. जैसे आप देख सकते हो इस प्लेलिस्ट में 23 वीडियोस हैं ऑन द चैप्टर रेडियो एक्टिविटी, राइट, ऑन एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू स्पेसिफिक क्वेश्चंस. So I think it would be very helpful to a student. So let's move on and do our questions. Question number 1. A list of various quantities is shown. Acceleration, displacement, force, length, mass, velocity. How many of these quantities are vector? Vector quantities identify करनी है. First of all, what is a vector quantity? A vector quantity has both magnitude and direction. ठीक है ना? So first of all, acceleration. Acceleration is a vector quantity. So is displacement. So is force. But length is not a vector quantity. It is a scalar quantity. And so is mass. But velocity is a vector quantity. So we have 1 2 3 4 vector quantities and 2 scalar quantities which we do not have to do anything to do with. ठीक है ना? So yeah, इनमें से कुछ स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज हैं दैट आर इन आवर सिलेबस. आप अपनी जो नोट्स हैं उनमें से चेक भी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. A student determines the circumference of a football. Which instrument gives the reading that is the circumference of a football? A caliper, a micrometer screw gauge, ruler, tape. First of all, caliper और micrometer screw gauge ये दोनों ना बहुत छोटी रीडिंग लेते हैं. सो अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ फुटबॉल इज फेयरली लार्जर. सो ये हमें उसकी रीडिंग नहीं देंगे. अ रूलर. अ रूलर इज अ रिजिड ऑब्जेक्ट. रिजिड ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी बेंट. आपके पास अगर एक रूलर पड़ा हो, अ प्लास्टिक रूलर और अ वुडन रूलर, दैट रूलर कैन नॉट बी बेंट अराउंड अ फुटबॉल. सो आपको उसका सर्कमफेरेंस नहीं पता चल सकता. व्हाइल ऑन द अदर हैंड अ टेप, जो टेप होती है, लाइक जो दर्जियों वाली टेप होती है, दर्जियों के पास जो टेप होती है जिससे आपका आपकी वेस्ट का सरकमफेरेंस चेक करते हैं, लाइक यू कैन टेक दैट एज एन एग्जांपल. वो टेप भी हम यूज कर सकते हैं. उस टेप से हम एक फुटबॉल का तो आराम से सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं. सो डी, टेप इज द राइट आंसर. Question number 3. A train sets off from a station at time t is equals to 0. The graph shows how the distance between the train and the station varies with time. Which statement about the movement of the train between T1 and T2 is correct? तो इस
टाइम ड्यूरेशन के बीच में वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन. So first of all, they're asking about the speed and they're asking whether the train is going towards the station or away from the station. तो इन दोनों चीजों में आपने खेलना है this question. So first of all, the speed. The speed is either decreasing or increasing. तो हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड का रिलेशनशिप कैसे पता चलता है? इट इज द ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है इट गिव्स अस द स्पीड. ठीक है ना? एंड द स्टीपर द ग्रेडियंट विल बी, द मोर द स्पीड विल बी. ठीक है ना? The steeper the gradient is of the distance time graph, the more speed will be. So as we can see, at T1 जो gradient है it is pretty much zero. ठीक है ना? But at T2 the gradient is at a maximum value. ठीक है ना? Because it is the most steepest at this value. So yeah, as I said, okay, speed is increasing because the steepness has increased. आगे, either it is moving away or towards the station. तो इसके लिए मैंने एक ग्राफ बना दिया है, not a graph like the values and a diagram. So first of all, let's talk about the values. The values is 10, 20, 30, 40 and all the way up to 100. Let's say this is 100. Hypothetically, this is 100 meters. ठीक है ना? ऐसी distance time graph चलता है कि it is 10 meters away, 20 meters away, 30 meters away or 100 meters away from the station, hypothetically. So let's say this is the train and this is the station. This is the train and this is the station. और ट्रेन जाती 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 एक स्टॉप पे पहुंच गई है विच इज 100 meters अवे फ्रॉम द स्टेशन, राइट? तो हाइपोथेटिकली एज वी आर स्पीकिंग, आपके दिमाग में कौन सा पॉइंट आएगा at which the train has reached? Let me specify, this is 100 meters apart. So this will be the point in graph where you would plot कि यहाँ अभी ट्रेन है. ठीक है ना? तो इसके आगे कैसे चलेंगे? ट्रेन ने वापस जाना है स्टेशन के पास. ट्रेन ने ट्रेन ने वापस स्टेशन के पास जाना है. तो यहां से वापस स्टेशन के पास ट्रेन जा रही है. तो हाउ विल द ग्राफ बी? जो ग्राफ है उसकी डिस्टेंस की वैल्यू फ्रॉम द स्टेशन इट विल फॉल फॉल फॉल. मतलब जैसे जैसे ये ट्रेन ट्रैवल कर रही है, फॉर एग्जाम्पल इट इज ट्रैवलिंग हियर, यहाँ पहुंची है ट्रेन, तो इट विल बी दिस पॉइंट. यहाँ जाती जा रही है इट विल बी दिस पॉइंट. इट इज 20 meters अवे फ्रॉम द स्टेशन. नाउ इट इज, एक सेकेंड, नाउ इट इज 10 meters अवे फ्रॉम द स्टेशन हियर. नाउ इट इज 0 meters अवे फ्रॉम द स्टेशन हियर. ठीक है ना? सो इट इज कमिंग बैक टू द स्टेशन. So that will be towards the station and D is the right answer. एक सेकंड. Question number 4. A coin falls from rest through the air, eventually reaches a constant speed. So they are referring to terminal velocity. Terminal velocity. There is a resultant force acting on the coin due to the two forces P and Q in the diagram. First of all, आपने label करनी है what is P and Q. तो मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ. 1, 2, 3, 4, 5. Now आपके अगर दिमाग में टू वैल्यूज आ गई हो फॉर पी एंड क्यू, व्हाट विल दोज टू आंसर्स बी? पी विल बी द एयर रेजिस्टेंस एंड क्यू विल बी द वेट. समझ आई? व्हाट हैपेंस टू द फोर्स पी? एयर रेजिस्टेंस को क्या होता है एंड व्हाट हैपेंस टू द रिजल्टेंट फोर्स बिफोर द कॉइन रीचेस द कांस्टेंट स्पीड? तो एयर रेजिस्टेंस को क्या होता है एंड व्हाट हैपेंस टू द रिजल्टेंट force? They are not asking about weight, they are asking about the resultant force. So let me tell you the stages through which the coin goes before reaching terminal velocity. So let's assume this is the coin. ठीक है ना? This is the coin. तो initially जब आप coin को throw करोगे, the only force which is acting is the weight.
द फोर्स ऑफ वेट है ना. जब आप एक कॉइन को थ्रो करोगे, द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द कॉइन इज द फोर्स ऑफ वेट. द एयर रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट. द एयर रेजिस्टेंस is dependent on the speed. जितनी स्पीड होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, राइट. जैसे जैसे ये कॉइन गिरता जाएगा इसकी स्पीड ज्यादा होती जाएगी, राइट. तो वैसे वैसे एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होती जाएगी. द एयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज एज द speed of the coin increases, right? And ultimately it will reach a point where the weight will be equal to air resistance. ठीक है ना. So air resistance will increase. The force P, which is air resistance, it will increase until it reaches a point where the air resistance is equal to the weight. The second is the resultant force. Resultant force will be equal to downward force minus upward force. एंड एयर रेजिस्टेंस ऐसा फोर्स है विच इज डिपेंडेंट ऑन द स्पीड. जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा एयर रेजिस्टेंस होगी. तो एज द एयर रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, द रिजल्टेंट फोर्स इज डिक्रीजिंग, एंड eventually it reaches a point where the two forces are equal, and when the two forces are equal there will be no resultant force when air resistance is equal to weight. ठीक है ना. The resultant force will eventually decrease. So C is the right answer. Question number 5. A satellite is shown moving around the Earth in a circular path at a constant speed. Which arrow shows the direction of the force on the satellite? चलो मैंने आपको ये कुछ 150 बार बोल दिया है. Whenever the an object is moving in a circular path, it is objected to centripetal force which act towards the center of the direction of motion. ये मैंने क्या बोला है. जब भी एक ऑब्जेक्ट जो है इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जो उसका इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, इट इज द सेंट्रिपिटल फोर्स. और जो सेंट्रिपिटल फोर्स होती है ना, इट इज अ फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मतलब इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है. The centripetal force will act towards the center of it. So, इस स्टेटमेंट के हिसाब से what is the answer? A, B, C, D. D is the right answer. A bonus question: what will be the direction of the velocity? The direction of the velocity will always be tangential to the direction of motion. मतलब A. Question number 6. Which row gives the mass and the weight of an object on the Earth's surface? जो हमारे पास mass होगा ना, mass का 10 times जो value है, that will be our weight, because W is equals to mg. W is equals to m into g, which is equals to 10. So 10 m will be equal to W. लेकिन this was in a simpler terms. जो समझदार स्टूडेंट होंगे उनको अभी तक समझ आ गया होगा. What is the answer? It is D. बट मैं आपको फिर भी प्रूव करके दे देता हूँ. ए अगर हम चेक करें, W is equals to mg में पुट करें, W 0.2 is equals to mass, which is 2, into gravitational field strength, which is 10. So 0.2 is not equals to 20. It is not equals to 20. That means it is wrong. W is equals to mg हम अप्लाई कर देते हैं on B. W हमें दिया हुआ है 10 is equals to m, which is 2, into g, which is 10. तो 10 is not equals to 20. आगे देख लेते हैं, एक और C देख लेते हैं. W, which is 5, is equals to 5, which is mass, into g, which is 10. 5 is not equals to 50. Lastly हम चेक कर लेते हैं. W is equals to mg. 50 is equals to
mass, which is 5, into G, which is 10. 50 is equals to 50. Therefore, this is the right answer. So we just have to put all the values in our equation. W is equals to mg. और जिस values में हमारे पास equal answer आएगा, that will be the correct option. So D is the right answer. Question number 7. Water is added to a measuring cylinder containing 100 centimeter cube of liquid paraffin. The density of paraffin is 0.8 grams per centimeter cube and the water is 1 gram per centimeter cube. As the water is added to the level of paraffin rises to 150 centimeter cube. The paraffin and water do not mix. What is the final? What finally is the total mass of the liquid in the measuring cylinder? So first of all, volume of water. वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा? एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ पैराफिन पहले कर लेते हैं. पैराफिन इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 150 centimeter cube minus 100 centimeter cube, which is 50 centimeter cube. Why did I do that? थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करें. एंड फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पानी का ग्लास है. उस पानी के आपके पास एक पैराफिन का ग्लास है. उस पैराफिन का ग्लास का वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब और आपने उसके अंदर एक एक्स अमाउंट ऑफ वाटर डाला है जिससे उसका टोटल वॉल्यूम हो गया है 150 centimeter cube. The change in the volume will be equal to the value of water's volume. ठीक है ना. तो वाटर का वॉल्यूम भी आ गया हमारे पास, पैराफिन का वॉल्यूम भी आ गया. व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पैराफिन? डेंसिटी ऑफ पैराफिन is equals to 0.8 grams per centimeter. Sorry, grams per centimeter cube. And what is the density of water? Density of water. Density of water is equals to 1 grams per centimeter cube. So yeah, हमारे पास चार वैल्यूज आ गई हैं. चार वैल्यूज से हमने निकालनी है masses. So first of all, let's calculate the mass of the paraffin. So as we know, density is equals to mass divided by volume. Let's put in the values. Density हमारे पास है 0.8. Mass हमारे पास निकालने वाला है and the volume is 100. So 0.8 into 100 is 80. 80 is the mass. 80 grams is the mass of the paraffin. Secondly, water. Water का निकालना है. Density is equals to mass divided by volume. Again, density हमारे पास 1 is equals to mass divided by volume. और volume हमारे पास है 1. Volume हमारे पास है 50. तो 50 into 1 is 50 grams, which is the mass. ठीक है ना. The total mass will be, एक second. The total mass will be, sorry for that, 80 plus 50, which is 130 grams. And we can see that in A. Question number 8. A horizontal beam is pivoted at X. A mass of 200 grams rests on the beam as shown. The center of mass of the beam is 50 centimeters from the right hand end of the beam. The beam is balanced. What is the mass of the beam? First of all, they are asking for the mass of the beam. Mass of the beam. What is the mass of the beam? In order to get that, first we have to dissect the question. The beam is balanced. What does that mean? The beam is balanced implies K clockwise moment is equals to the anti-clockwise moment. ठीक है ना? Because the beam is balanced. And what is the mass of the beam? Acha, thirdly, we need to identify what the
clockwise moment is and what the anti-clockwise moment is. Anti-clockwise moment is that is pretty obvious. Okay, it is being created by the mass of 200 grams. So this is the anti-clockwise moment. The clockwise moment will be generated by by like the 10 centimeters of the extra ruler because either 40 centimeters are total or यहाँ 60 centimeters. So this side has 10 centimeters of extra ruler which will be creating the clockwise moment. ठीक है ना? So let's say this is the point of 10 centimeter mark, 10 cm. ठीक है? And this will be creating the clockwise moment. हम ले लेते हैं mg, right? mg लिख लेते हैं mg into 10, which is the distance. mg is the force, is equals to anti-clockwise moment. Anti-clockwise है this, और इसी का भी सेम होगा mg into the distance. Distance क्या है 20. तो इधर का mg क्या हो जाएगा, इधर का एज इट इज mg लिख देते हैं into 10. इधर का हो जाएगा मास की वैल्यू है 200 ग्राम्स into g की वैल्यू है 10 into distance की वैल्यू क्या है, it is 20. तो let's do the math. 200 into 10 into 20. What is the answer? It is 40,000. mg into 10 is equals to 40,000. 40,000 से पहले ये वाला 10 डिवाइड हो जाएगा. 40,000 divided by 10, that will be 4,000. mg is equals to 4,000 is equals to 4,000. और इसके बाद g की वैल्यू क्या होती है? g is equals to 10. तो m is equals to 4,000 divided by 10. That will be m is equals to 400 grams. Very easy. So C is the right answer. Question number 9. Where on the graph is the limit of proportionality for an elastic solid? So this is an extension load graph, and as you can see, they are proportional to each other until a certain point P. P tak extension or load they are proportional to each other, but after P they are no longer proportional to each other. और जो graph है, I mean जो curve है, it curves up. समझ आई? So this is the point which is the limit of proportionality. It is at P. और मैं आपको इसको इसकी एक प्रैक्टिकल टर्म्स में भी एक आंसर दे देता हूँ. लाइक बचपन में हम सबने पेन्स के साथ खेला और पेन्स के अंदर से ऑफन टाइम्स हम स्प्रिंग निकाल लेते थे. कभी कभार जब हम स्प्रिंग निकालते थे और उसको कुछ ज्यादा खींचते थे तो वो ऐसी स्टेट में पहुंच जाता था कि वो स्प्रिंग वापस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था. राइट. सो दैट वाज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. आपने उसके ऊपर जितना फोर्स लगाया एंड आफ्टर दैट फोर्स जो स्प्रिंग था वो अनप्रोपोर्शनल हो गया था. राइट. इट वाज नॉट कमिंग बैक. So that was the limit of proportionality for that spring. So it is the same with this. ऐसा spring लगता होगा वो. It is the spring with this. आप पहले एक certain amount of load या force apply करते थे और एक certain amount of extension आती थी. But after a certain point, आप अगर load apply करोगे और the spring will no longer be in the original position as it was. It will no longer be in the original shape. तो या आगे चलते हैं. Question number 10. A sealed gas syringe contains a fixed mass of gas. Up, the piston is moved and the volume of gas doubles. The temperature of gas does not change. The temperature that is not changing. So the only thing which is changing is the volume. And as we know, the volume and the pressure are inversely proportional to each other. मतलब एक ज्यादा होएगा तो दूसरा कम होएगा. दूसरा ज्यादा होएगा तो एक कम होएगा. Right? So they are inversely proportional to each other. So what does that mean? अगर गैस डबल होएगी तो प्रेशर आधा होएगा. मैंने आपके लिए एक लाइक एग्जांपल रेडी रखी हुई है. सो वी हैव टू फाइंड द फाइनल प्रेशर. हमारे पास जो इनिशियल प्रेशर है दैट वाज 15,000. हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम है दैट इज 10 सेंटीमीटर क्यूब. जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है विच इज डबल हो गई है वॉल्यूम विच इज 20 सेंटीमीटर क्यूब. राइट. अब हमने क्या निकालना है? हमने फाइनल प्रेशर निकालना है विच शुड बी half the original pressure. So P1 15,000 into V1. My bet is that the final pressure will be 7.5 thousand pascals or 7,500 Kelvin. अच्छा, P1 into V1 which is 10 is equals to P2 which is P लिख देते हैं into V2 which is 20.
So let's do the simple math. 15,000 into 10 divided by 20. That will be 7,500 as I told you. So all we have done is that we have doubled the volume. We have doubled the volume, so the pressure has halved. समझ आ गई? Hopefully that is very like self-explanatory. Question number 11. Which expression for pressure is correct? So as we know, pressure is equals to force divided by area. So B seems correct. Question number 12. At a depth D in seawater, the total pressure experienced by a diver is 2P, where P is atmospheric pressure. At which depth is the pressure 4P? So what he's actually saying is, a second. What he is saying is कि जो total pressure है ना, total pressure is equals to 2P. और 2P में से 1P जो है that is atmospheric pressure. That means the baqaya, the remaining 1P will be the pressure from the depth of water. समझ आ गई? मतलब जब डेप्थ डी होगी तब 1P ऑफ प्रेशर पड़ेगा ऑन दैट डाइवर. तो मतलब जब डेप्थ 2D होगी तब कितना पड़ना चाहिए? 2P पड़ना चाहिए ऑन द डाइवर, द प्रेशर. और जब डेप्थ 3D होगी तब प्रेशर कितना पड़ना चाहिए? 3P पड़ना चाहिए ऑन द डाइवर. सो अगर हम 3P को द प्रेशर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द वाटर, अगर हम इसको इससे ऐड कर दें 1P से, विच इज द प्रेशर फ्रॉम द एटमोस्फेयर, what will the total pressure be? It will be 4. ये आपको बस प्रैक्टिकली ना आपको फंसाने की कोशिश की गई है. वो समझ रहे थे कि ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना ये पागल हैं और ये समझ लेंगे कि 2P जो है इट इज ओनली फ्रॉम द डेप्थ, और वो आंसर दे देंगे या बी या ए. लेकिन योर आंसर इज सी. सो या Question number 13. Work done by a force F on the body is calculated by multiplying F by a quantity Q. What is Q? मैंने आपको बहुत दफा बताया हुआ. I think I told you in the last paper that work done is equals to force into displacement. But this is like very, what do you call it? Simple. This is very straightforward. This is not the actual equation. This is an incomplete equation. Distance लिख लो. They have mentioned distance. The actual equation is force into displacement या distance in the direction of force. Direction of force. This is the complete equation. Distance traveled in the direction of the force. ठीक है ना? What is Q? Q is that. Question number 14. Some solar panels have an area of 12 meters square. Each 1 meter square of solar panel receives 0.85 kilojoules of energy from the sun in 1 second. The efficiency of the panel is 16%. How much power do they produce? So first of all, we have to calculate the total power. Total power हमारे पास कैसे आएगा? They have already told us that 1 meter square of solar panels receives 0.85 kilojoules of energy. So if we multiply that by 12, won't we get the total energy output? 12. Yes, we will, which is 10.2 kilojoules. ठीक है ना? Per second. So the efficiency of the panel is 16%. तो इसकी हम efficiency निकाल लेते हैं. Efficiency कैसे निकलती है? Efficiency अगर आपको percentages थोड़ा सा भी आता हो, you can easily calculate the percentage of like 10.2 का आपने 16% निकालना है, तो 10.2 को डिवाइड कर दो बाय 100, which is, और इसको मल्टीप्लाई कर दो बाय 16 and you will get the answer. ठीक है ना?
which is 1.632, and that is still kilojoules. ठीक है ना, kilojoules है अभी भी, सॉरी, kilojoules. लेकिन दे आर आस्किंग फॉर पावर. जब भी वो आपको बोले ना कि एनर्जी फ्रॉम द सन या एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स इन 1 सेकेंड, आपके दिमाग में इंस्टेंटली आना चाहिए पावर. पावर का बता रहे हैं, बिकॉज पावर जो है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी, सॉरी, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. अगर एनर्जी हमारे पास 1.632 है और अगर हम इसको डिवाइड करें बाय 1, वी विल गेट द सेम आंसर. एंड यू कैन जस्ट चेंज द यूनिट्स एंड यू डोंट नीड टू डू दिस एक्स्ट्रा वर्किंग. ये आपके दिमाग में खुद ही आ जाना चाहिए. सो द आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 1.6, अगर आप इसको राउंड ऑफ कर दो. ठीक है ना. सो क्वेश्चन नंबर 15. A copper rod is heated at one end. Which statement describes how the heat transfer occurs in copper? अच्छा, कॉपर क्या है हमारे पास? कॉपर है हमारे पास एक मेटल. मेटल में हीट ट्रांसफर कैसा होता है? अगर आप कॉपर की, फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, if you heat one side of the copper, let's say this is a copper rod, अगर आप एक साइड को कॉपर पे आग लगाते हो या उसको गर्म करते हो, the particles will heat up, and what will happen to these particles? The heat will travel to other particles. And which particles am I talking about? I'm talking about the electrons. So electrons जो होते हैं, they move from the hotter end to the cooler end, and they in turn transfer the energy around. जो कॉपर होता है ना, when it is heated on one side, जो हीट प्राइमरीली ट्रांसफर होती है ना, इट इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे गेन काइनेटिक एनर्जी इन द हॉटर एंड एंड दे मूव टुवर्ड्स द कूलर एंड एंड दे कैरी द हीट विद देम. ये अपने साथ हीट भी लेके जाते हैं. समझ आ गई? और ये प्रोसेस होता है फॉर द कंडक्शन इन मेटल्स. सिर्फ मेटल्स की बात हो रही है. दिस इज नॉट ओवरऑल कंडक्शन. दिस इज ओनली अबाउट द कंडक्शन इन मेटल्स. सो या, energetic free electrons, so it is either C or D, move from cooler end to the hotter end. दिमाग अगर किसी का भी थोड़ा सा भी चलता हो ना, they would like identify कि कूलर एंड से हॉटर एंड पे जाने का इनका तुक नहीं बनता. अगर ये हॉटर एंड से कूलर एंड में जाएंगे, तभी ये हीट ट्रांसफर कर सकते हैं ना कि अगर कूलर एंड से हॉटर एंड में जाए. सो या, डी इज द राइट आंसर. Question number 16. The diagram shows a clinical thermometer. Which factors affect the sensitivity of the thermometer? Sensitivity of the thermometer mainly dependent होते हैं on the diameter of the bore. अगर उसका diameter narrow है, they will be more sensitive. अगर उसका diameter broad है, they will be less sensitive. It is a very common and easy question. Question number 17. Which row is correct for thermocouple? Thermocouple thermometer. सो थर्मोकूपल की काफी ज्यादा वो होती है, व्हाट यू कॉल इट, क्वालिटीज होती हैं इन कंपैरिजन टू अ थर्मोमीटर, नॉर्मल थर्मोमीटर यू कैन से. अच्छा, मेजर्स वेरी हाई टेम्परेचर. थर्मोकूपल, आई थिंक इट कैन मेजर फ्रॉम 200, -200 up all the way up to 1500. So it does measure very high temperatures. So you can say that. So this is a yes. समझ आ गई? आगे देख लेते हैं. आगे है हमारे पास रिस्पॉन्स क्विकली टू टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है ना. सो दैट इज ऑल्सो अ यस, इट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिव थर्मोमीटर. और इसकी एक आध और भी खूबियां हैं, यू कैन से, along with like being responsive, it can measure rapid change. मतलब अगर एक टाइम पे 50 सेल्सियस है और दूसरे साइड पे 20 हो गया है, तो इट कैन मेजर रैपिडली द चेंज इन टेम्परेचर एंड इट इज अ वेरी सेंसिटिव थर्मोमीटर. अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग. ठीक है ना. आगे वो पूछ रहा है व्हाट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी. अच्छा, जो हीट कैपेसिटी होती है ना, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस. इसको हटा दें. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
to raise a substance's, what do you call it, temperature by 1 degree. ठीक है ना? So yeah, and it also, of course, it depends on the specific heat capacity of that substance and the mass of the substance. यानी कि अगर ज्यादा mass होएगा, it will be, for example, आप कोई भी चीज ले लो, like anything, like it is not related to mass, it is related to that specific object. जैसे आपने अगर एक टी पॉट ले लिया, अगर उस टी पॉट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है, वी विल नीड टू ऐड देयर मास. बट अगर हमने उसी मास का टी पॉट का हीट कैपेसिटी निकालनी है, इट विल नॉट रिक्वायर मास, इट विल ओनली रिक्वायर लाइक द values required to get the heat capacity. So yeah, the amount of energy that a body can absorb without melting, no. The amount of thermal energy required to raise the temperature of the body by 1 degree Celsius, like I told you. So आगे चलते हैं जी. Question number 19. Which statement about water is correct? Water के बारे में पूछ रहे हैं, ये तो अब सबको बताना चाहिए ना, water तो सब पीते हैं. At the boiling point, water vapor molecules have say the same kinetic energy as liquid water molecules. This seems like the right answer. क्योंकि जो वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी सेम काइनेटिक एनर्जी होती है एज दे आर लिक्विड मॉलिक्यूल्स. वेपर्स हैव द सेम के ई एज द लिक्विड. समझ आ गई? दैट मीन्स के बॉइलिंग के दौरान जो वाटर होता है, व्हेन इट ट्रांजिशंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, इट इज विदाउट अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो मैं बोल रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं होती व्हेन इट गोज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स. काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज. समझ आ गई? इवेपोरेशन occur at a lower boiling point, बट दैट इज नॉट अ, और अगर हम कंपेयर करें इवेपोरेशन विद बॉइलिंग, इट विल नॉट बी द सेम. सो या, क्योंकि ये आंसर है हमारा ए. Question number 20. A water wave in a ripple tank refracts as it moves from deeper water into shallow water. What happens to the speed and to the frequency of the wave as it moves into shallow water? So as a water wave transitions from deep water to shallow water, जो frequency होती है, it generally remains the same. The frequency remains the same because जो frequency होती है, it is dependent on the source of the wave. It is not. It is dependent on the source, and it is dependent on the characteristics of the property of the medium. ठीक है ना? On the other hand, जो what do you call it? As a water wave enters the shallow water, जो speed होती है, it decreases and the wavelength becomes shorter. Speed decreases and the wavelength becomes shorter. और जो हमारा frequency है, that will stay constant. So moving on, question 21. Light refracts from liquid into air as shown. The refractive index for light moving from air to liquid is 1.4. What is the angle of incidence in the liquid? So basically मैंने आपको एक और चीज भी समझानी है about this formula. ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सा एंगल लेंगे, ये आपने डिटरमिन करना है. हमने एंगल कौन सा लेना है फॉर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. वी विल टेक दिस एंगल. जिसने भी ये वाला एंगल कहा है ना, लाइक डोंट अपीयर, आई एम जस्ट किडिंग, लाइक जस्ट वर्क हार्डर, वॉच मोर ऑफ माई वीडियोस. ठीक है ना? तो या, तो हम ये वाला एंगल लेंगे बिकॉज वी हैव टू टेक द एंगल फ्रॉम द रे ऑफ लाइट, और रे ऑफ लाइट टू द नॉर्मल. सो 90, ये होल 90 है ना, 90 minus 32 will give us the angle which is 58. 58 लिख देते हैं यहाँ, 58. चलो जी, ये 58 आ गया हमारा. चलो 58 के साथ वर्किंग करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न समथिंग अबाउट द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है n इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, इट इज नॉट रॉन्ग बट इट इज इनकम्प्लीट.
ठीक है ना? साइन आई ऊपर आ सकता है, साइन आर भी ऊपर आ सकता है. इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन विच वन ऑफ द, व्हाट डू यू कॉल इट, एंगल्स आर आउटसाइड द डेंसर मीडियम. डेंसर मीडियम के बाहर जो होगा ना, जो भी एंगल रेयर मीडियम होगा, विच एवर एंगल is in the rarer medium will be in the numerator. ठीक है ना? It will always be in the numerator, whichever angle is in the rarer medium, and whichever angle is in the denser medium will be in the denominator. ठीक है ना? So likewise, even though this is the angle of refraction, we're gonna put it in the numerator. So 1.4 is equals to sine I, which is 58, divided by sine R, which is 58, divided by sine I. तो अपने calculators निकाल लें and calculate. So first of all, take the we have to rearrange this. Actually, let me rearrange it for you. Sine I is equals to sine 58 divided by 1.4. Sine sine 58 divided by 1.4 is 0.6. Sine I is equals to 0.6. अब 0.6 का हम इनवर्स लेंगे. 0.6 साइन इनवर्स ऑफ 0.6 लेंगे, which is 37. I is equals to 37. जब भी एक साइड पे साइन होता है और दूसरी साइड पे एक वैल्यू होती है, साइन दूसरी तरफ चला जाता है एंड यू टेक अ इनवर्स ऑफ दैट नंबर. So it becomes 37, which becomes the answer is B. Question 22. A ray of red light in air enters a semicircular block. Which diagram shows the partial reflection and the refraction of ray of light? First of all, we have to draw a normal. और जो normal होता है, that is always 90 degrees to the, it is always 90 degrees to the boundary. अब हमने चारों के चारों नॉर्मल्स बना लिए, पहले हम रिफ्लेक्शन देख लेते हैं. पहले हम रिफ्लेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं. रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. लेकिन इधर ए और बी में आपको नजर आ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. देयरफॉर ए एंड बी आर रॉन्ग. ठीक है, ए एंड बी आर रॉन्ग. सो सी देख लेते हैं और डी देख लेते हैं. सी और डी में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. But now it comes down to refraction. ठीक है ना? It comes down to refraction. जब भी एक denser मीडियम से एक rarer मीडियम में लाइट जाती है, it goes away from the normal. Away from normal. And we can only see that in D. So D is the right answer. Question number 23. Which statement about human vision is correct? In a normal eye, the image on the retina is magnified and upright. No, it is diminished. छोटी हो जाती है. अच्छा, मतलब this is wrong. In a long-sighted eye, distant objects form images in front of retina. In long-sightedness, this is also incorrect. It is behind the retina. ठीक है ना? Short-sighted eyes produce only virtual image. D. Short-sighted eyes are corrected by the use of diverging lens. Diverging lens क्या होता है? It is the lens that looks something like the, sorry, it looks something like ये और फिर ये. It looks something like this. ठीक है ना? जैसे यहाँ लाइट आ रही होती है. When it passes through the diverging lens, what happens is that it is more spread out. ठीक है ना? So yeah, that is correct. Question number 24.
Question number 24. White light enters a prism and forms a spectrum. The rays in the air are labeled. Which diagram shows how the white light is dispersed by the prism? So first of all, A and B are wrong. Why, you might ask? Because जो dispersion होती है ना, it happens inside the prism rather than outside the prism. So yeah, in that regards, A and B are incorrect. It's either C or D. अच्छा, C और D में the main difference is the color sequence. सी में दिखाया गया है रेड इज ऑन द टॉप एंड वायलेट इज इन द बॉटम, और डी में दिखाया गया है वायलेट इज इन द टॉप एंड रेड इज इन द बॉटम. But only one can be true, and that is C, because the sequence is red, yellow, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. So yeah, violet नीचे आता है, red ऊपर आता है. Question number 25. The sound from a ship is reflected by a cliff. An echo is heard by a sailor on the ship 4 seconds after the sound is made. The speed of sound in air is 320 meters per second. How far from the cliff is the ship? So what they're asking is for us to tell the distance between the ship and the cliff. Cliff और ship के बीच में distance पूछ रहे हैं. And how can we calculate that? हमारे पास कौन कौन सी values हैं? We have the values of the speed. हमारे पास speed है which is 320 meters per second, और हमारे पास है टाइम विच इज 4 seconds. ठीक है ना? बट हम कौन सा टाइम लेंगे? विल वी टेक दिस टोटल टाइम और विल वी टेक एक साइड का टाइम? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. तो दे आर सेइंग कि एक साउंड है दैट गोज फ्रॉम द शिप टू द क्लिफ, और क्लिफ से वापस आती है टू द शिप एंड अ सेलर हियर्स इट. और इस टोटल प्रोसेस में 4 सेकंड लग रहे हैं, राइट? 4 seconds इन दिस टोटल प्रोसेस. हमें तो सिर्फ एक साइड का वो चाहिए, टाइम चाहिए. So we will divide the original time by 2 in order to get the time for one side. So that will be 2 seconds. तो हम 2 सेकंड टाइम ले लेंगे and we'll put this in the equation. Speed is equals to distance divided by time. स्पीड हमारे पास 320 है इज इक्वल टू डिस्टेंस विच इज एक्स कह लेते हैं, और टाइम हमारे पास 2 है. तो 320 इंटू 2 इज 640 विच इज द आंसर एक्स. So question 26. And x of a metal rod attracts the north pole of a compass needle. Which statement about rod is correct? It is made of copper. अच्छा, copper से तो नहीं बना हो सकता because copper is not a magnetic material. C. It is made of steel that is not initially magnetized. This could be the answer. D. It is made of steel with a north pole at x. तो उन्होंने हमें पहले क्या बोला था? It attracts the north pole of the compass needle. North pole and north pole will not attract each other. Why? Because like poles do not attract. So D cannot be the answer either. So C is the right answer. It is made of steel that is not initially magnetized. Question 27. Which diagram shows the pattern and direction of electric field lines near a positive charge? Near a positive charge, the electric field lines look like this. Near a negative charge, the electric field lines look like this. So the only valid option is A. Question 28. A positively charged rod is held close to an insulated metal sphere. The sphere is earthed as shown. The earth connection is removed and then the rod is removed. Which diagram shows the charges on the sphere after the rod is removed? अच्छा, first of all, उन्होंने अर्थ किया हुआ है. The whole system has been earthed, और initially it was uncharged. अच्छा, तो क्या होगा? जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके साथ कौन से चार्जेस अट्रैक्ट होंगे? नेगेटिव चार्जेस. तो नेगेटिव चार्जेस सारे इस साइड पे आ जाएंगे एंड द पॉजिटिव चार्जेस विल बी ऑन दिस साइड. ठीक है ना? पॉजिटिव चार्जेस दूसरी साइड पे आ जाएंगे. बट व्हाट द अर्थ वायर विल डू, अर्थ वायर क्या करेगा? अर्थ वायर की वजह से more negative charges will come into the sphere. Negative charges will come into the sphere and they will cancel out the positive charges. So all we will be left with will be negative charges. हमारे पास सिर्फ negative charges बच जाएंगे. And after the rod has been removed, what will happen to the negative charges is
दैट पहले जो नेगेटिव चार्जेस ऐसे थे एक जगह पे ही, दे विल इवनली स्प्रेड आउट, बिकॉज लाइक चार्जेस जो होते हैं, जो एक जैसे चार्जेस होते हैं, दे डू नॉट अट्रैक्ट, दे रिपेल. सो आफ्टर द रॉड हैज बीन रिमूव, द चार्जेस विल रिपेल एंड दे विल बी evenly distributed throughout the sphere. समझ आई? तो they will look something like this. They will not be concentrated at one area. So what does the right answer look like? It will be C. Let me explain to you one more time. So जब आप rod को close लाओगे, what will happen is that all the negative charges will concentrate here. Positive charges इधर चले जाएंगे. What the earth wire will do is earth wire more negative charges को स्फेयर में लाएगा, और नेगेटिव चार्जेस जो है दे विल कैंसिल आउट द पॉजिटिव चार्जेस, एंड व्हेन द पॉजिटिव चार्ज व्हाट यू कॉल चार्जेस आर कैंसिल आउट, देयर विल बी ओनली नेगेटिव चार्जेस, और नेगेटिव चार्जेस इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आफ्टर द रॉड हैज बीन रिमूव्ड. सो या, question number 29. The diagram shows an electrostatic precipitator. It can be used to remove dust from the air. What happens at the negative grid? अच्छा जी, negative metal grid. नेगेटिव मेटल ग्रिड पे क्या हो रहा है, दैट ऑल द पार्टिकल्स हैव बीन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. नेगेटिव मेटल ग्रिड पे ऐसा क्या हो रहा है कि सारे के सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, दे हैव बीन अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव मेटल प्लेट्स. उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं. दे आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. व्हाई? बिकॉज they are being attracted to the positive plates, and a particle can only be attracted to a positive plate when its charge is negative. ठीक है ना? Because unlike charges attract. So ये negative metal grid क्या कर रहा है? It is giving free electrons to the dust particles, और जो dust particles के पास electrons आ जाते हैं और वो ऊपर जाते हैं, what happens to them is they are they are attracted to the positive plates, और वो positive plates के साथ चिपक जाते हैं. So the dust particles gain electron is the right answer. Question 30. A 100-watt lamp is switched on for 5 hours each day for 3 weeks. The cost of 1 unit of electricity is $0.24. How much does it cost to run the lamp for this time? So first of all, let's calculate what our, what do you call it, time is, the total time. Total time. The total time will be calculated using the amount of hours. 5 घंटे रोज यूज हुआ है for 3 weeks. 3 weeks में कितने दिन होते हैं? 3 weeks में कितने दिन होते हैं? 1 week has 7 days, so 3 weeks have 21 hours. 21 days, I mean. So 105 hours, total hours हमारे पास है 105 hours. हमारे पास पावर कितनी है? पावर इज 100 watts. हमने इसको किलोवाट में लेना है because we have to calculate the, what do you call it? We have to calculate the power in kilowatts. So हम divide by 1000 कर देंगे and that will give us 0.1 kilowatt. ठीक है ना? And now what we will do is we will do 0.1. We will multiply the power by the time, which is 105, multiplied by the cost, which is 0.24, and that will give us 2.625. I think this might be incorrect because you can never trust this one, this calculation. 0.1 into 105 into 0.25. 0.24, sorry. Oops. 10.5 multiplied by 0.24. So it will be 2.52. So 2.52 is our answer. So what we did is we multiplied the power by the time into the cost. ठीक है ना? So basically what we did was multiply the energy by the cost. So that is our answer, which is C. Question 31. The information on the back of an electric room heater is shown. What is the suitable fuse rating for this room heater? तो उन्होंने हमें इसकी करंट दिया हुआ है. They have given us the current in amperes, which is 4.2.
4.2 इसका करंट है, तो हम जो इसकी फ्यूज रेटिंग लेंगे, इट विल बी स्लाइटली अबव द current they have given us. Slightly above the current they have given us. So we will not take 4.2, we will not take 4, we will take 5. ठीक है ना? We will not take 13 because 13 is too high, 4 is too low, and even 4.2 it is too low because uncertainty हो सकती है, कभी करंट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। अगर थोड़ा सा भी करंट ऊपर चला जाए above the fuse rating, जो फ्यूज होगा that will blow and that will create a inconvenience. तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं above the fuse rate, ठीक है ना, above the actual current. तो फ्यूज रेटिंग हम ले लेंगे 5 amperes. Question number 32. The diagram shows a horizontal rectangular wire coil WXYZ between the poles of the magnet. There is a current in the coil in the direction shown. Which statement is correct? First of all, we have to declare what the magnetic field lines are. Magnetic field lines हमेशा जाती हैं north से south तक. So they look something like this. एक सेकंड बस बना दूं तो 3 4. So it looks good. So ये ऐसे और ये last. First of all, what we have to eliminate is XY and WZ. Why, you might ask? Because XY and WZ are parallel to the magnetic field lines. Therefore, no force will be exerted. तो XY कहाँ है? ये और WZ. WZ, WZ कहाँ है? ये ZW. तो both of them are incorrect. So yeah, अब हम देख लेते हैं YZ और WX के अंदर से. Now, in order to identify that, we have to use the Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule में आपने एक थंब निकालना है, थम्स अप करें, थम्स अप से आप एक गन बना लें, राइट, जैसे बच्चे होते हुए निकालते थे, और उस इंडेक्स फिंगर के परपेंडिकुलर आपने रख देना है अपनी मिडल फिंगर, लाइक दिस, ठीक है ना, ये गन बना दी और इंडेक्स फिंगर के परपेंडिकुलर होगी मिडल फिंगर विल identify or determine the current. Magnetic field will be identified by the index and force will be identified with the, what do you call it, thumb. So as I do it, I can see that XW जो है, that is creating a upward force. XW is creating an upward force. एक second. While YZ is creating a downward force. तो यह हमें कहाँ नजर आ रहा है? WX experiences an upward force. This is correct. आप अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे, so you would find out that the force is upwards. ठीक है ना? तो क्वेश्चन 33, which energy transfer takes place in an electric kettle? Electric kettle क्या करती है? Electric kettle converts the electric energy into heat energy. How? Because the kettle का जो मेन काम होता है ना, वो आपने देखा होगा कि आपके घर में kettles वगैरह होती हैं, it is to like heat the water. So in order to heat the water, you need to convert the electric energy into heat energy. So electric to heat, B is the right answer. Question number 34. The diagram shows a current carrying conductor between the poles of magnets. The force on the wire acts downwards. तो अभी के लिए जो force है, that is downwards. Four changes are possible. The current is increased. A stronger magnet is used. The current is reversed. The poles exchange positions. Two changes made together keep the force acting downwards. अच्छा, ऐसे कौन से दो फोर्सेस, आई मीन चेंजेस होंगे विच विल रिजल्ट इन द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स? ठीक है ना, पहले हम सारे ये पढ़ लेते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, द चेंजेस दैट आर पॉसिबल. सॉरी. फर्स्टली, द करंट इज इंक्रीज्ड. In increasing the current, the only change it will make is increasing the force. So it will only increase the force. A stronger magnet is used. A stronger magnet will only increase the force as well. So we're left with 3 and 4, and that is the pair that we're gonna choose. So D is the right answer. अच्छा, इधर तक अगर सबको समझ आ गई हो तो आई कैन गो टुवर्ड्स द लॉजिक ऑफ इट, राइट. मैं लॉजिक भी समझा देता हूँ बिकॉज हमने जो यूज किया ना प्रोसेस, दिस वाज द एलिमिनेशन प्रोसेस, राइट. आई एम गोना गो इनटू द प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट. तो बेसिकली अगर आप एट दिस पॉइंट यूज करोगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल,
what you will find out is that the force is downwards, और जो हमारी magnetic field है it is always from north to south, right? एक सेकेंड. What they have suggested is that the current is reversed. तो हम करंट को रिवर्स कर देते हैं. पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब इस डायरेक्शन में जाएगा करंट. एंड सेकेंडली द पोल्स एक्सचेंज पोजिशंस. When the poles exchange positions, what is supposed to happen is that the force is still supposed to be downwards. ठीक है ना? तो अभी भी ये जा रहा है north to south. So again, you can use your Fleming's left-hand rule, and what you will find out is that the force is still downwards to mitigate any misunderstanding. फिर से आप अपना Fleming's left-hand rule apply करो, and you'll find out that the force is still downwards. So that supports my claim. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35. In an alternating current AC generator, a magnet rotates near a coil of wire. The induced electromotive force in the coil is displayed on an oscilloscope. Which trace is produced as the magnet slows down? As the speed decreases, along with the speed, the frequency will decrease as well. Frequency will decrease, time period will increase, and lastly, the amplitude will decrease. Amplitude increase. ठीक है ना? सो अब देख लेते हैं किन में हमें नजर आ रही है. इसमें हमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी तो डिक्रीज होते हुए नजर आ रही है. द एम्पलीट्यूड इज नॉट चेंजिंग इन दिस वन, द एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग इन दिस वन. So the only viable option looks like D, क्योंकि इसमें जो time period है that is increasing, the frequency is decreasing, the amplitude is decreasing as well. So वो हो गया हमारे पास D part. Question number 36. A student uses a transformer to light a filament lamp using 230 volts AC supply. The lamp has a maximum voltage rating of 6 volts. तो लैम्प की वोल्टेज रेटिंग है 6 volts. ये यहाँ लिख लेते हैं. What happens when the circuit is switched on? For that, we would need to calculate the secondary voltage. And how would we calculate that? First of all, this is the primary voltage. Vp is 230. And then the number of turns, this primary number of turns is 300. So Np is 300. Again, the Vs, we have to calculate the Vs, and we have the Ns. Ns is 20. So we have to calculate the Vs. ठीक है ना? So for that we'll use the formula Vs by Vp. Vs divided by Vp, which is 230, is equals to Ns 20 divided by Np, which is 300. ठीक है ना? तो Vs by 230 is equals to 0.0667. And if we multiply that by, क्योंकि 230 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. Vs is equals to 0.0667 into 230. So 0.0667 into 230 is equals to, let's check, 15.341. So the secondary voltage is 15.341. Actually, let's just round it off to 15.3 because I might have made some mistake. उसकी voltage है 15.3, or maximum voltage rating of that bulb is, of that lamp is 6 volts. So what will happen is that the lamp will blow up. ठीक है ना? So let's see. The lamp does not light at all. The lamp will light, but eventually it will blow up. The lamp lights at normal brightness. No. The lamp lights dimly. That is the opposite. It will blow out with a blast. ठीक है ना? B. The lamp lights up
brightly and then goes out. ठीक है ना? That is the only explanation for this question. So yeah, आगे चलते हैं. Question number 37. This statement about nuclear fusion is correct. Nuclear fusion occurs at low temperature. Nuclear fusion कहाँ होती है? Fusion happens in the sun. Fusion happens in the sun. और sun पे it has very high temperatures. So it does not happen at low temperatures. Nuclear fusion occurs only between heavy nuclei. That is fission. Fission is the splitting of heavy nuclei. But fusion is the combination of smaller nuclei. As you can see, this is fusion. और fusion में दो छोटे atoms are turning into a bigger atom with energy. While fission में larger atom है and it is splitting into smaller atoms with some energy. Nuclear fusion occurs in the formation of stars. As I told you, it occurs in stars. And C is the right answer. Nuclear fusion powers most electricity generating stations. No, that might be fission as well. Question number 38. One radioactive decay, radium-226 decays to radon-222 as shown. Which particles are produced? So this is the, I think, easiest question of them all. अगर हम इसकी जगह लिख दें, what do you call it? Sorry, an alpha particle. और अगर हम इनको ऐड कर दें, अगर 226 में से हम माइनस कर दें द atomic mass of the alpha particle, that will be 222, which is radon. ठीक है ना? और अगर हम उसका प्रोटॉन नंबर माइनस कर दें, 88 में से 2 माइनस कर दें, that will be the proton number of the radon as well. So only an alpha particle is emitted. Question number 39. Here comes a bit of a मजेदार question as well. ठीक है ना? तो आगे चलते हैं 39. The count rate from a radioactive source falls from 4000 counts per minute to 500 counts per minute in 72 minutes. What is the half life of the source? मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया हुआ है ऑफ द हाफ लाइफ. हाफ लाइफ का ये फॉर्मूला होता है. ठीक है ना? द नंबर ऑफ ईयर्स और यू कैन से टाइम फ्रेम कह दो. द टोटल टाइम बिकॉज वो नहीं हो रहा. व्हाट यू कॉल इट? Number years में नहीं है, it is in minutes. So yeah, it depends. The total time divided by the half life is equals to the number of halves. First of all, we have the half. We do not have the half life. We have to calculate the half life. We have the total time which is 72 minutes divided by the half life is equals to the number of halves. We have to calculate the number of halves, and how will we calculate that? We will calculate that using the current value and the previous value. अगर हम previous value को divide करें by 2, we will get 2000, and if we divide that by 2 again, we will get 1000, and if we divide that by 2 again, we will get 500. So 3 halves are necessary for us to get that value, right? 3 halves are necessary to make the value from 4000 to 500. So we will write 3. तो 72 से यहाँ 3 डिवाइड हो जाता है और हाफ लाइफ ऊपर चला जाता है. हाफ लाइफ. So 72 by 3 is 24 minutes, which is the final answer. D is the right answer. This is a formula that is not officially used, but I use it. So yeah, you can use this as well. So the number of halves is a bit tricky because 4000 को अगर आप divide by 2 करोगे, that will be 2000. उसको divide by 2 करोगे, that will be 1000. And उसको divide by 2 करोगे, that will be 500. So this is 3 times the value of half. So yeah, we can write 3 in the number of halves. Which particles are found inside the nucleus of an atom? Neutrons and protons. This is the easiest question. So yeah, that is going to be it for this video and this paper. I hope you enjoyed. I hope this video was helpful towards you. And if you find it helpful, make sure to like आप इसको spread करें because you should spread knowledge, right? अपने दोस्तों को help out करें, सबको अपने teachers को help out करें, whatever, right? And pray for me, pray for yourself, नमाज पढ़ना ना भूलिएगा. Have a great day. Allah Hafiz.